इजराइल के राजदूत ने हमास की क्रूरता के कुछ वीडियो दिखाए हैं और आप भी देखिए उन्होंने क्या क्या वीडियो दिखाए हैं। हालांकि उससे भी ज़्यादा क्रूर बहुत से कांड हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या वीडियो यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग में सबके सामने हमास की क्रूरता का क्या वीडियो दिखाया है, वह वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर ने पूरे यूएन असेंबली में दिखाया था। देखते हैं वही वीडियो, लेकिन वीडियो का पहले 1 मिनट नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने इसे युद्ध को वॉर क्राइम कहा, या वॉर क्राइम, इसे अमानवीय बर्बर कहा। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को कत्ल करते हुए दिखाया, ये वीडियो आपको भी दिखाएंगे। उन्होंने नागरिकों का अपहरण भी दिखाया, या नागरिक को अपहरण करते हैं, बच्चों को कत्ल करते हैं। और बच्चे मतलब ये कोई 8-10 साल का बच्चा तो है ही, कोई 1 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 1 दिन का बच्चा है, और उस बच्चे को बंदूक से नहीं, चाकू से, तलवार से रिपीटेडली, एक बार नहीं 50 बार, 60 बार 1 महीने 2 महीने के बच्चों को चाकू से मार मार कर हत्या करते हैं। उन्होंने कहा ये एक ज्यूइश हॉलिडे, यहूदी छुट्टी के दिन अचानक इतने रॉकेट दागे गए, नागरिकों का अपहरण हुआ, बुजुर्गों और बच्चों को अमानवीय तरीके से कत्ल हुआ। देखिए उन्होंने क्या वीडियो दिखाए और उनका पूरा स्पीच जो है यूनाइटेड नेशन में वो भी दिखाते हैं। चलिए उन्होंने क्या कहा और क्या वीडियो दिखाए। Good afternoon. The past days have been devastating for each and every Israeli. Israel suffered an unprecedented attack, and the number of casualties is catastrophic, truly unfathomable. Over the past 2 days, following Hamas's surprise attack on Israel, my country has suffered hundreds of fatalities. Yesterday, in the early morning of the Jewish Sabbath, and on a Jewish holiday, savage Hamas terrorists fired thousands of rockets into Israel. But this was only the beginning. As rockets rained down indiscriminately upon Israeli towns and cities, hundreds of Hamas terrorists infiltrated Israel and began a barbaric pogrom of unparalleled magnitude. Ruthless terrorists gunned down innocent Israeli civilians in the streets, murdering anything that moved. Anything. I'll show you just one example. Just look at this photo of bodies of women strewn in the street, in a bus stop. Innocents murdered in cold blood. These animal-like terrorists broke into homes, gathered entire families into rooms, and shot them point blank, as if they were stomping on insects. Grandparents and the elderly, among them Holocaust survivors who endured the Nazis, were violently dragged from their homes, this time by Hamas, and taken into Gaza. Can you get me the photo of the Holocaust survivor? זה לא פה, אם אני אומר זה לא. Look at this grandmother being forced to hold a Hamas terrorist rifle as he takes a picture with her. This is inhumane. Inhumane. Mothers and their babies, as well as babies separated from their mothers, were brutally taken hostage. Just look at this video now. This mother is crying as she clutches her 2 precious babies before being put on a truck to Gaza.
These are war crimes, blatant, documented war crimes. But tragically, the abominations don't end here. Hamas terrorists happened upon an outdoor party of hundreds of young Israelis celebrating the holiday weekend. These savages gunned down Jewish revelers just like Nazi death squads in the 1940s. Hundreds were butchered, their bodies mutilated and defiled. And those who survived were taken to Gaza. Listen to this young girl screaming as she is kidnapped, separated from her friend, not knowing what fate awaits her. Try to comprehend the magnitude of this situation. Try to digest the ruthless inhumanity. I have seen shocking footage, graphic images that will forever be seared in my brain. What we are witnessing are war crimes, blatant, barbaric war crimes, slaughtering civilians, abusing hostages, taking babies from their mothers. There are no words to describe such savagery. I don't want to imagine what is happening right now to all of those innocent Israeli civilians being held captive in Gaza, the horrors they are enduring. हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।